Hey, so good evening, guys, once again. So that's my second lecture for you today. So, as the title of this section has been named as Advanced Fundamental Analysis 2. For all of those who are wondering that when did we have like fundamental analysis and advanced fundamental analysis 1, so go back to the series of College Dekho on YouTube Live only, and you can watch the fundamental analysis session 1, which touched all the basics in very detail. You can also watch the advanced fundamental analysis 1. You can also watch the sessions on valuations and financial ratios as well. So, most of the topics were covered in these sessions only. And as we go on with more advancement in fundamental analysis, we'll try to talk about more important terms or more important concepts in fundamental analysis. Okay, so I remember that in the second session, that was the advanced fundamental in session 1. So, in that session, we talked about the banking ratios in Advanced Fundamental Analysis 1, right? We talked about the banking ratios. So, in banking ratios, I told you that there are a different kind of ratios for different industries. Apart from those common ratios that we studied in financial ratios in fundamental analysis, there are more ratios as well. So, those ratios are the common one and would be used for all the industries. But apart from those, you have more additional ratios as well, as we covered in the banking sector. And I told you that day very well that these additional ratios are the different ones, be it for the banking sector or the insurance sector or the pharma sector or the metal sector or with the oil extraction companies as well. So these ratios differ, and these are the additional ratios that you people must know about. Because when a person goes for the corporate interview, be it for a banking sector, be it for an insurance sector, or be it a metal industry or a pharma industry, those normal ratios won't work at all. You also need to know the additional ratios for those particular sectors. So, in the previous session, we talked about the most important banking ratios, and I clearly remember that. We talked about the loan to value ratio, installment to income ratio, CASA ratio, the net interest margin. We talked about the capital adequacy ratio as well. Okay. So, two more ratios that I want to talk about in this session, that is the efficiency ratio and the provision for the credit losses ratio. These two ratios are again one of the most important ratios that you people must know for the banking industries or those who are appearing for the BFSI sector interviews. BFSI, banking, finance. Okay, all these things you should know for the BFSI sector. Okay, banking, financial services, and insurance. These are basically used for the BFSI sector, these additional ratios. So when we talk about the efficiency ratio, so as the formula says, I'll just enlarge the screen for you so it is visible for the participants to watch. So when we talk about the efficiency ratio, the ratio says the non-interest expense by the revenue. अब कंपनी का अब बैंकिंग कंपनीज के बारे में you people know only about the interest expenses as they earn from the interest income. But what about the non-interest expenses? These non-interest expenses are the basic usual expenses of the banking operations, be it some certain fees for the operations or some charges for the operations or for the usual banking work. जब आप बैंक में जाते हो, there is a lot of paperwork. So a basic amount of commission charge for these paperworks or traveling expenses when a banker goes from his own bank to a party's house. So all these expenses and basic expenses which are non-interest bearing. Okay. So these are included in the efficiency ratio divided by the option of revenue. Okay. So we have revenue. So revenue, how the bank earns the revenue. The bank basically earns revenue from the interest that the bank receives. And that is a major purpose of revenue for the banks. So we can say it is basically a ratio of the non-interest expenses, जो बैंक के खर्चे होते हैं, divided by the interest or the revenue that is incurring or that is making. Ideally, like when we talk about the term efficiency, in ideal scenario, we say that the efficiency should be as high as possible. But what happens in case of these things in terms of banks? Again, we can say that this ratio should be higher.
बट वाई दिस रेशियो शुड बी हायर? अगर ये रेशियो ज्यादा हो गया तो मैथमेटिकली क्या होगा? इसका मतलब हो जाएगा कि रेवेन्यू इज लेस एंड द नॉन इंटरेस्ट एक्सपेंसेस आर मोर, राइट? But obviously, we want the revenue for the bank should be more because the major sources of income for the bank is the interest income that the bank makes for granting loans, right? So, again, I would not say personally that this ratio should be high or low. I would say it should be a balanced ratio कि expenses भी हो but interest margin भी company को मिलता रहे. Okay. Next, we have the provision for credit losses. This ratio is useful in terms of NPAs or the non-performing assets. So what happens in case of non-performing assets? अगर कोई लोन लिया है किसी ने बैंक से, मान लो कि 200 करोड़ का लोन लिया किसी ने बैंक से. If someone has paid back that 100 crores and the leftover 100 crores is left outstanding for a period of more than 90 days, मतलब 90 डेज के पीरियड पे उस रिमेनिंग अमाउंट पे ना तो आपने कुछ इंटरेस्ट पेमेंट करी है ना कोई प्रिंसिपल पेमेंट करी है, सो दैट टर्न्स आउट टू बी एनपीएस और द नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स. अब एनपीएस कैन ऑल्सो बी ऑफ टू काइंड्स. यू कैन हैव द ग्रॉस एनपीएस एंड द नेट एनपीएस. अब ग्रॉस एनपीएस क्या होते हैं? 200 करोड़ का लोन था एंड 100 करोड़ की पेमेंट हो चुकी है, बट रेस्ट 100 करोड़ पे ना तो प्रिंसिपल पेमेंट आई है और ना ही इंटरेस्ट पेमेंट आई है. तो दैट रिमेनिंग 100 करोड़ इज योर ग्रॉस एनपीए. स्ट्रेट फॉरवर्ड इतना पैसा नहीं आया. बट if out of that 100 rupees or on that 100 rupees the banking companies have made certain provision for that, right? मान लो एंड प्रोविजन फॉर क्रेडिट लॉसेज ही वही है. अगर बैंक को लगे कि मैं 100 करोड़ मुझको वापस नहीं मिल सकता या 50 करोड़ मुझको वापस नहीं मिल सकता, the bank has created a provision for that equivalent to at least 100 crores. That is, if a bank is not able to recover that 100 crore from that person, the bank already has that 100 crore in its reserves ताकि banking operations do not get affected and the banks do not go into bankruptcy and all, ताकि बैंक के पास पैसा बचे. Okay. If out of that 100 crores का लोन जो वापस नहीं मिला था, if the bank has made a provision of 50 crores for that, then 100 minus 50, the remaining 50 is the net NPS. तो net NPS nothing but जो NPS हैं after adjusting for the point of provisions. 100 करोड़ is the gross NPS जिसका कोई provision नहीं है. But if the bank has made a certain provision for that, that's a net NPA. Okay, 100 crores minus 50 crores because 50 crore is the provision that the bank has made. Okay, so 50 crore is the net NPA. अब इससे लोन होता है, we have the provision for credit losses divided by the net loans and advances. Okay, अब provision for credit losses, again we want this ratio should be high because we want कि net loans and advances जो हमने लोगों को दिए हैं वो हमको वापस मिलें. अगर नहीं मिल रहे तो the provision for such NPAs should be high so that the bank does not go into the field of bankruptcy. Okay, so these things we should know. अगर लोन दे रहे हो तो provision उससे भी ज्यादा होना चाहिए. And that is why after the collapse of a large number of banks we have seen, or large number of NBFCs as well, be it your Yes Bank, IIFL, Indiabulls, or you also have like various banks in 2008 crisis as well, these NPA requirements have increased and stress testing is done for banks. You had the Dodd and Frank Act passed, and that you had the concept of stress testing कि वो देखते हैं कि अगर बैंक को अपना पैसा वापस नहीं मिलता, so how can the bank survive? Okay, so in this case the provision for credit losses ratio should be as high as possible. Okay, and the rest of the ratios we talked about. So that was all about the banking ratios. So when you are trying or like when you are trying to analyze the banking sector, so try to analyze the banking sector in terms of these banking ratios. And also you should know like, when you are going for the interviews of banking sector to talk about these banking ratios. Okay, stock related ratios की बात करते हैं. Though all those financial ratios that we did, these all are applicable to stocks or banking stocks. तो हमने सब बात करी. But when you are talking about your portfolio, the portfolio is basically, it is a strategy for diversification. Instead of having just one stock or like investing into one stock, you are diversifying into a large number of stocks.
So the cumulative stocks is a portfolio. Okay. So what happens in the portfolio turnover ratio? The formula says the minimum securities bought or sold divided by the average net assets into 100. Average net assets are nothing but your portfolio में कितने stocks हैं. Okay. So अब denominator को or the average net assets you can consider as the assets in your portfolio or the stocks in your portfolio. Okay. And in the numerator you have the minimum of the securities bought or sold. मतलब कितनी securities खरीदी जा रही हैं और बेची जा रही हैं. In simple sense, if we have a portfolio consisting of 20 stocks, okay, so it can happen that according to the market conditions we are rebalancing our portfolio. कि कभी कभी हम उन shares को बेच रहे हैं, कभी उन shares की जगह we are buying new shares or we are like replacing the existing shares. So these things happen in the market. सो पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो का मतलब ही ये है जो आपका पोर्टफोलियो है जितने भी उसमें स्टॉक्स हैं हाउ मच बाइंग एंड सेलिंग इज बीइंग डन फॉर दो स्टॉक्स. वन थिंग टू बी नोटेड, हायर द बाइंग एंड सेलिंग इज डन फॉर दीज स्टॉक्स हायर वुड बी द एक्सपेंसेस बिकॉज स्टॉक्स को खरीदने एंड बेचने का भी खर्चा होता है एंड वो खरीदने और बेचने का खर्चा इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए दैट योर रिटर्न्स आर अफेक्टेड. Those expenses should not exceed your return and that is why the portfolio turnover ratio should be low. ज़्यादा buying and selling portfolio में नहीं होनी चाहिए. हो सकता है if buying and selling is being done more, then there are so many charges of buying and selling that your return comes out to be negative or less. So portfolio turnover कम होना चाहिए. Okay. Second, we have the risk and reward ratio. Okay. रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो में क्या होता है वी आर ट्राइंग टू नो दैट हाउ मच रिस्क वी आर टेकिंग टू गेट अ सर्टेन रिटर्न. अगर 2:1 का रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो आ रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमने 2 पॉइंट्स का रिस्क लिया टू गेट अ रिटर्न ऑफ 1 जो कम है ऑब्वियसली. सो आइडियली इट हैज टू बी लाइक 1:2 कि रिस्क हमने लाइक 1% का लिया बट हमको 2% का रिटर्न मिला. ओके. रिस्क कम से कम होना चाहिए एंड रिटर्न ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए. ओके. या फिर रिटर्न सेम होना चाहिए और रिस्क लाइक कम से कम होना चाहिए. तो इसका एक फॉर्मूला है. इन द न्यूमिनेटर यू हैव द एंट्री पॉइंट माइनस द स्टॉप लॉस पॉइंट एंड डिनोमिनेटर में यू हैव द प्रॉफिट टारगेट माइनस द एंट्री पॉइंट. अब इसको मैं समझाता हूँ थ्रू द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाइट बोर्ड. या सो इट सेज basically as per this formula it is saying your entry point minus the stop loss point in the numerator, your entry point minus the stop loss point divided by your profit target minus your entry point, right? So as per this formula we have this thing, the entry point minus the stop loss point divided by the profit target minus the entry point. एंट्री पॉइंट इज नथिंग बट एट द प्राइस यू परचेज योर शेयर्स. मान लो कि 100 रुपए का मैंने शेयर मार्केट में खरीदा. ओके. आई कैन जस्ट इरेज इट बिकॉज दिस फिगर वी हैव टू फिल अप. तो हमने ई की वैल्यू पुट कर दी दैट इज नथिंग बट द एंट्री पॉइंट. ओके. अब स्टॉप लॉस मार्केट में क्या होता है एंड प्रॉफिट टारगेट क्या होता है. स्टॉप लॉस इज समथिंग द एक्सटेंट ऑफ लॉस विच आई कैन बेयर. मान लो अगर 100 रुपीज का मैंने शेयर खरीदा है, ठीक है. ऑब्वियसली व्हेन आई एम बाइंग द शेयर आई एम होपिंग फॉर अ प्राइस राइज बिकॉज अल्टीमेटली आई वांट द प्रॉफिट. ओके. आई वांट इट टू बी 110, 120, 150, 200, 500. बट एक मेरे दिमाग में चीज भी होगी कि मैं लॉस कितना बेयर कर सकता हूँ. ठीक है. मान लो मुझे लगा अगर शेयर 99 पे आ गया तो इट्स ए लॉस ऑफ जस्ट 1 रुपीज आई कैन बेयर. अगर 90 पे आ गया इट्स ए लॉस ऑफ 10 रुपीज आई कैन बेयर. अगर 70 भी आ गया मैं बोल रहा हूँ इट्स ए लॉस ऑफ जस्ट 30 रुपीज आई कैन बेयर. ठीक है. बट अगर मुझे लगता है कि 50 पर आ गया, सीधा 50 पर आ गया, ओके, दैट्स ए लॉस ऑफ कंप्लीटली तुम्हारा आधा पोर्टफोलियो चला गया, राइट? 50%. योर पोर्टफोलियो हैज फॉलन बाय 50%. तुम्हारी वैल्यू होगी 50. अब तुमको लग रहा है कि 50 रुपए मेरे लिए बहुत होते हैं. ओके. 50 रुपीज से ज्यादा का मैं लॉस सह नहीं सकता.
तो आई पुट इन 50 रुपीज एज माई स्टॉप लॉस कि 50 रुपीज पे जैसे ही मेरा प्राइस आएगा मार्केट में, माई शेयर्स विल बी ऑटोमेटिकली सोल्ड ऑफ इन द मार्केट. I won't be placing an order physically or telling my broker to place it. I just place an order कि 50 रुपीज का स्टॉप लॉस है या 50% का स्टॉप लॉस है. बट अगर उस वापस 50 से 100 पे आना होगा, द पोर्टफोलियो हैज टू राइज बाय 100% एंड नॉट 50%. इस चीज का ध्यान रखो. अगर पोर्टफोलियो 100 से 50 पे आ गया, इट्स अ फॉल ऑफ 50%. बट अगर 50 से 100 पे वापस लाना है, तो 50% का तुम्हें इंक्रीज नहीं करना पड़ेगा. इट वुड बी एन इंक्रीज ऑफ 100%. 50% करोगे तो 75 तक ही बढ़ेगा. सो द परसेंटेज ऑफ फॉल इज मोर देन द परसेंटेज ऑफ राइज. तो इस चीज का मार्केट में ध्यान रखना एंड स्टॉप लॉस ध्यान से लगाना. देन प्रॉफिट. अगर मैंने शेयर खरीदा है 100, तो आई माइट हैव अ सर्टेन एक्सपेक्टेशन दैट माय शेयर प्राइस वुड गो अप टू 150 और 200 और 350. इट कैन हैपन. एंड जैसे ही वो मेरा प्रॉफिट टारगेट मीट होगा, आई सेल ऑफ द शेयर. मान लो मेरा प्रॉफिट टारगेट इज 300 रुपीज, तो 100 - 50, 300 - 200. ओके, यू हैव अ रेशियो 1:4. मतलब मैंने लाइक 1 का लिया रिस्क, बट रिटर्न मुझे 4 का मिला. तो इट्स अ गुड रेशियो. फॉर लाइक 1 पॉइंट ऑफ रिस्क और 1% ऑफ रिस्क, माई रिटर्न इज 4%. अगेन इस प्रॉफिट टारगेट को भी सोच समझ के लगाना. एंड अगेन दी स्टॉप लॉसेस एंड प्रॉफिट टारगेट्स माइट डिफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. दैट इज अगेन बिकॉज ऑफ बिहेवियरल फाइनेंस, योर साइकोलॉजिकल assumptions और फाइनेंशियल साइकोलॉजी. एंड अगर इसके बारे में सीखना है, अगेन आई हैव माई ओन वीडियो ऑन टेक्निकल एनालिसिस ऑल्सो, which talks about the concept of like behavioral finance and financial psychology. Okay, so that you can watch for this purpose. So that was about the concept of risk और reward ratio कि रिस्क कम लो. रिस्क कम होना चाहिए, बट जो प्रॉफिट कमा रहे हो या फिर रिटर्न मार्केट से कमा रहे हो, दैट शुड बी हाई. ओके, so that one thing you should know. बात आती है when we talk about the sector of insurance. अब इंश्योरेंस में कौन से रेशियोज होने चाहिए? देखो, इंश्योरेंस कंपनी का मेन रोल क्या होता है एंड हमारा क्या रोल होता है? एज अ कस्टमर वी हैव टू पे द प्रीमियम्स टू इंश्योरेंस कंपनी, सो दैट अगर कुछ भी गलत हो, दीज कंपनीज आर एबल टू रिएम्बर्स बैक फॉर दैट. ओके, सो इट्स एन एग्रीमेंट, you can say, okay, with the insurance company ki we'll be paying the premiums and in return you will be just providing a safety. अगर कुछ भी गलत हो गया, अगर लाइफ इंश्योरेंस ले रहे हो, तो अगर मतलब कि लाइफ चलेगी, तो योर फैमिली मेंबर्स वुड बी गेटिंग अ सर्टेन अमाउंट. अगर टर्म इंश्योरेंस नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि बिकॉज टर्म इंश्योरेंस में नहीं मिलता पैसा. टर्म इंश्योरेंस में इट इज लाइक इफ द पर्सन लिव्स, मान लो अगर पर्सन की डेथ नहीं हुई, सो इन टर्म इंश्योरेंस यू वोंट बी गेटिंग द मनी. But in different kind of insurance, be it ULIP or endowment or money back, like you will be getting the money as well. अगर person जिए या फिर ना जिए, ठीक है. So you will have this insurance. अब insurance companies को तुम analyze कैसे करोगे? One ratio for these insurance companies, you have the claim settlement ratio. You have this claim settlement ratio. अब claim settlement ratio क्या होता है? जितने claims कंपनी को मिले हैं, claims जो कंपनी को मिले हैं, उसमें से हाउ मच क्लेम्स द कंपनी हैज सेटल्ड. अगर 100 क्लेम्स कंपनी के पास आए हैं, हैज द कंपनी सेटल्ड ऑल 100 क्लेम्स, और हैज द कंपनी सेटल्ड 50 क्लेम्स और 40 क्लेम्स और 30 क्लेम्स? अगेन दिस क्लेम सेटलमेंट रेशियो शुड बी एज हाई एज पॉसिबल. उससे पता चलेगा हाउ इफेक्टिव दिस इंश्योरेंस कंपनी इज. 100 क्लेम्स मिल रहे हैं, तो द कंपनी शुड सेटल एज मेनी क्लेम्स एज पॉसिबल. सो आउट ऑफ द टोटल क्लेम्स रिसीव्ड, how many claims the company has settled? Okay, so that is nothing but your claim settlement ratio. That is one thing you need to know. The second thing we talk about, give me a second. I'll just connect it to the power and I'll just get it back.